Also, Trisha, just a question. When the speaker is speaking, you are going to spotlight the video or something? Yes, I will spotlight the video. Okay. All right. Hi, Trisha. Yeah, Kangshu this side. I'm just checking my voice. Am I audible? Yes, I you're think there's some. clearly audible. Thank you. Thank you. Thank you. Prabhupti.
वृक्ष हो भले हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य, जल रहा मनुष्य, अश्रुपूत रक्त लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome again on tedxgdmc, a platform where we can share our views because ideas are worth spreading. Today, I'll start this event with a very basic question. What is life? Though scientists have intensively studied life on Earth, defining life in unequivocal terms is still a challenge. The search for life's meaning has produced much philosophical, scientific, theological, and metaphysical speculations throughout history. First, Record defined life as cognizance of order, coherence, and purpose in one's existence, the pursuit and attainment of worthwhile goals, and an accompanying sense of fulfillment. In 2016, Martella and Stegar define life as coherence, purpose, and significance. In contrast, Wong has proposed a four-component solution to the question, pure, where P stands for purpose, a significant life goal. U stands for understanding, understanding of who you are. R stands for responsibility, responsible for deciding what kind of life you want to live. E stands for enjoyment, sense of satisfaction when you have exercised your responsibility. But still, those definitions are hypothetical, as they lack one of the most important components, that is, challenges. Life cannot be stationary. It has to keep going. And this keep going means facing problems, coping up with them, and then moving on. We are all faced with challenges at some point in our lives. Challenges that we didn't create. Challenges that happen beyond our control. The difference is how we respond. Either you can adopt the attitude that there's nothing you can do, or you can see the challenge as your call for action. Today, we have a panel of speakers here who will share with us the challenges they have faced and the turning points of their lives when they had to make their call, and that led to the drastic changes of their lives. Our first speaker is India's youngest motivational speaker, only 14 years old and studying in 9th standard. She seeks to help young minds find their own definition of success and celebrate their selves. Today, she'll share with us a story, a journey of an ordinary girl with her life problems turning into a warrior. So let's welcome Prabhupti Chaudhary. आगे कदम आगे कदम आगे कदम, मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम, पथ बंद है पीछे न चल और पीठ पर धक्का प्रबल, मत सोच कर ले फैसला ले बाहों में उत्साह भर, जीवन समर के सैनिकों संभव असंभव को करो, कण कण निमंत्रण दे रहा आगे कदम आगे कदम आगे कदम। दोस्तों, मैं प्राप्ति चौधरी आज आपके साथ एक 14 साल की लड़की की जीवन यात्रा शेयर करना चाहती हूँ। और इस सफर की शुरुआत होती है 1 अगस्त 2006 को, जब एक अंडरवेट और प्री मैच्योर लड़की का जन्म हुआ, जिसे डॉक्टर्स ने इस दुनिया में आने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए। बड़ी मुश्किल से वो इस दुनिया में आई तो सही, लेकिन एक ऐसी बॉर्न डिसीज के साथ आई जिसका कोई इलाज नहीं था, और आजीवन उसे इस बीमारी से जूझना पड़ेगा। उसके जीवन का संघर्ष उसी दिन से शुरू हो गया था। किसानों के परिवार में जन्म लेने वाली ये लड़की जब 10 ही दिन की थी, तब हाई ग्रेड फीवर और जॉन्डिस से ग्रसित हो गई। Doctors had lost all the hope, but her parents didn't give up. They tried all possible medications
allopathy, homeopathy, Ayurvedic. After an intense struggle, she finally survived, and a fighter was born that day. It turned out that she had won the battle, but it wasn't her last. जब वो 3 साल की हुई, तब एक और नई बीमारी ने उसके जीवन को उथल-पुथल कर दिया. She was diagnosed with chronic bronchitis. Time and again, she had to bear asthmatic attacks. She had to undergo asthmatic treatments and nebulization periodically. दिल्ली के पॉल्यूशन ने उसे और बीमार कर दिया. 9 साल तक वो बहुत बीमार और थकी हुई रहती थी, इतना कि अपने घर की सीढ़ियां भी ढंग से नहीं चढ़ पाती थी. फिर टाइमली मेडिसिन्स, डॉक्टर्स के चक्कर और बहुत सारी रिपोर्ट्स के बाद फाइनली एक रिपोर्ट आई जिससे रूट कॉज पता चली. वो रूट कॉज थी ग्लूटेन. ग्लूटेन व्हीट में प्रेजेंट होता है और एकदम से उस 9 साल के बच्चे को बोल दिया गया था कि आज से आप गेहूं से बनी कोई भी चीज नहीं खा सकते. रोटी, केक, बिस्कुट, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, कुछ नहीं. उसको सीलिएक पेशेंट डिक्लेयर कर दिया गया और आज तक मेडिकल साइंस ने इसका इलाज नहीं निकाला है. उसके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब उसके सामने बैठकर सब कुछ खाते थे और उसको उन चीजों को सूंघना भी अलाउड नहीं था. एक टाइम ऐसा आया वो बहुत इंफीरियर फील करने लगी. स्कूल में जहां सभी बच्चों को लंच ब्रेक का बेसब्री से इंतजार रहता है, उसे उस लंच ब्रेक से नफरत होने लग गई. वो अपना खाना छुपा छुपा कर खाती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बात बहुत चुभती थी. उसने सारी बर्थडे पार्टीज, सेरेमनी, स्कूल पार्टीज सब में जाना बंद कर दिया. She was much disturbed and fed up with her life. तब डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि उसको कहीं दूर पहाड़ों में हॉस्टल पर भेज दो जहां पॉल्यूशन कम हो, शायद वो वहां ठीक हो जाए. लेकिन पेरेंट्स उसके बिना नहीं रह सकते थे. That's why they took a strong step and moved to a newly developed society in Noida, जहां उसे सारी फैसिलिटीज मिली. स्कूल पास में था, स्पोर्ट्स वगैरह सब था. It was a turning point in her life. तब उसके पास 2 चॉइसेस थी. पहली, या तो अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को, भगवान को, अपने खाने को कोसते रहना, या फिर जो अपना प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट करना, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना, दुनिया को एक नए नजरिए से देखना. बेसिकली जिंदा रहना या जीना. उसने वो दूसरा ऑप्शन चूज करा. तब उसके पेरेंट्स ने उसको प्रोत्साहित करना शुरू करा. उसको समझाया कि बेटा आपसे नीचे भी लोग हैं जो आपसे कम रिसोर्सेस पर एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं. और तब वो आत्मबल और आत्मविश्वास से भर चुकी थी. उसको वो हर एक लिमिट तोड़नी थी जो उस पर लगाई गई थी. उसने सोचा कि अब लाइफ की बॉल्स बहुत हुई और अब बैटिंग की बारी है और अब सीधा 6 लगाना है. There's a famous quote from Bhagavad Gita that if you don't try for what you want, don't cry for what you lost. उसे डॉक्टर्स ने स्विमिंग पूल के पास जाने से भी मना करा था because chlorine could affect her. But with her belief and determination, उसने स्विमिंग भी करी और उसमें मेडल्स भी जीते. She wasn't made for sports due to lack of stamina, lack of physical strength, लेकिन उसने इसको एज अ चैलेंज लिया और अपने ऊपर बहुत मेहनत करी. जो लड़की पहले अपनी घर की सीढ़ियां चढ़कर भी हांफने लग जाती थी, आज वो पता नहीं क्या क्या कर सकती थी. उसने बहुत स्पोर्ट्स खेले, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, एंड शी एक्सेल्ड इन ऑल ऑफ देम. तब एक नया सब्जेक्ट आया था, गुड क्वालिटी इंडोर एयर, जिसमें उसके पेरेंट्स डिफरेंट एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कर रहे थे एंड शी आल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन इट.
उन्होंने अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाए और तब उस लड़की ने समझा कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। उसने इस चीज को देखा, परखा, समझा और फिर इसके बारे में लोगों को प्रेरित और जागरूक करना शुरू कर दिया। तब एक एनजीओ द्वारा आगरा के एक प्रोजेक्ट में उसको अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला, जहां से उसे बहुत अप्रिसिएशन मिला। फिर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का फैसला करा। फिर उसे मोटिवेशनल टॉक्स आते गए और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती गई। It was a miracle turnaround in life from a timid, weak, asthmatic, and sick girl to a cynosure of all eyes. उसने अपनी जिंदगी में सीखा कि हम कभी थकते नहीं हैं जब तक हम अपने माइंड को कमांड नहीं देते कि हम थक गए हैं। हमारी बॉडी हमारे हाथ में है और हम इससे जितना काम करवाएं वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस लड़की ने 12 साल की उम्र में ही अपने आप को बहुत बिजी कर लिया। सुबह जल्दी उठना, 2 घंटे अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान देना, फिर स्कूल एंड स्कूल के बाद कोचिंग, 4 घंटे फिजिकल कोचिंग के बाद पूरा एग्जॉस्ट होके घर आना और अपने अगले दिन के सेमिनार और वीडियो की स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना और उसके बाद जो बाकी बचा टाइम था वो अपनी स्टडीज को डेडिकेट करना। लॉकडाउन शुरू होने से पहले उसके फैमिली डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि इसको कहीं दूर अगर इसकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए अगर इसको कोरोना होता है तो ये इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट करेगा। इसलिए वो लोग कुछ महीनों के लिए अपने विलेज में शिफ्ट हो गए। उसकी मदर मेडिकल फील्ड में थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा पाई और दिल्ली में अकेली रहती थी। कोरोना वॉरियर और इस देश का नागरिक होने का फर्ज निभाती थी। अपनी जान की परवाह करे बिना वो रोज हॉस्पिटल जाती थी। उस लड़की ने बिना किसी बेसिक अर्बन फैसिलिटीज और अपनी मदर के बिना आधा साल अपने विलेज में बिताया, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई उसके खाने की, क्योंकि कोई इतने प्रिकॉशंस नहीं रखता था जितनी उसकी मदर रखती थी। जब सिचुएशन ठीक हुई वो लोग वापस दिल्ली आए। शायद ये विधाता को मंजूर ना था और उन्होंने एक और बार बॉलिंग करी। वो और उसके फादर कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए। अस्थमैटिक होने के कारण उसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला गया, लेकिन दिल्ली में बेड नहीं मिले। इसलिए उसने एक बार और संकल्प लिया कि अब खुद ही अपना ट्रीटमेंट करना है और घर में ही ठीक होना है। कहते हैं ना कि अंधकार को दूर करने का अगर कोई संकल्प कर लेता है तो वो एक अकेला जुगनू भी उस अंधकार को हरा देता है। संकल्प दृढ़ था, सब कुछ वापस ठीक हो गया। थोड़ी वीकनेस रही, लेकिन आपको तो पता है वो लड़की थी एक फाइटर। स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जलाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपना सूर्य स्वयं बन जाओ। कितनी अच्छी बात है ना कि जो परम पिता परमेश्वर है उन्होंने हमें वो सारी शक्तियां दी है जो उनके पास है, आपको भी और मुझे भी। और ये हम दोनों पर डिपेंड करता है कि हम उन शक्तियों का किस प्रकार, किस चीज में कितना और कैसे प्रयोग करें, विधाता पर नहीं। अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि वो लड़की कौन है। जी हाँ, वो लड़की मैं ही हूँ और ये मेरी ही कहानी है। मैं आपको बता दूं कि आज मुझे 6 साल हो गए हैं वीट से बनी कोई भी चीज खाए को, और आज मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अराउंड 100 वीडियोस है और अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स है। That is the story of a 14-year-old girl fighting all odds to come this far. And it's just the beginning. There's a long way to go for her.
Thank you very much. Thank you, Prabhupti. That was so strong. Prabhupti taught us that even difficult of all challenges can't change that one strong motive in your mind. Success don't come alone. It's not like you started with a plan and suddenly success falls in your lap out of nowhere. Behind every success, there are many failures. And we have to accept the fact that failures are inevitable experiences. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षु है और आज मैं आप लोगों के साथ हिंदी में बात करूंगा। दोस्तों, हम किसी के जीवन में, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी घटना होती है जो उसको और उसकी सोच को कंप्लीटली बदल देती है, और ये हर किसी की लाइफ में होता है। ऐसे ही एक घटना मेरे साथ भी हुई। मैं 4th क्लास में पढ़ता था, बहुत छोटा था, बट उस घटना ने मेरे पूरी जीवन को, मेरी पूरी सोच को, मेरे पूरी पर्सनालिटी को बदल के रख दिया। स्कूल जाते समय घर के और स्कूल के बीच में एक बड़ा सा तालाब था। सरकारी स्कूल में पढ़ता था। बड़े सा तालाब को उसकी पगडंडियों के सहारे पीछे से क्रॉस करके अक्सर हम स्कूल जाया करते थे। सीजन में जब कमल का फूल का सीजन होता था, उस तालाब में बहुत सुंदर सुंदर से कमल के फूल निकलते थे। अक्सर वापस आते समय स्कूल से मैं हाथ बढ़ा के 1 या 2 कमल के फूल तोड़ लिया करता था और खेलते हुए घर चला जाता था। ऐसा ही एक दिन मेरे जीवन में आया। स्कूल से लौट रहा था, देखा एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा कमल का फूल थोड़ा सा अंदर तालाब के अंदर है। सरकारी स्कूल के बच्चे थे, पैंट फोल्ड की, बैग को जमीन पे पटका और एंटर कर गए तालाब के अंदर। अच्छा, कमल के पौधे की या किसी भी जो पानी के अंदर होने वाला जो भी वनस्पति होती है, उसकी एक आदत होती है, वो फ्लोटिंग होते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मेरे शरीर से जो वेव्स डेवलप हो रही थी, जो जनरेट हो रही थी, उससे वो कमल का पौधा धीरे धीरे, कमल का फूल धीरे 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 मुझसे दूर होता चला गया। शायद हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है ना, जिस चीज के पीछे आप पढ़ते हैं वो आपसे दूर होती चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैंने पाया कि मेरा पैर उस तालाब के अंदर किसी गहरे गड्ढे में स्लिप कर गया है और मैं डूब रहा हूं। मेरी आंख में, मेरी नाक से, मेरे कान से, मेरे मुंह से, हर जगह से पानी बॉडी के अंदर जाने लगा था। मैं डूब रहा था। मुझे केवल एक आवाज सुनाई दी थी, वो थी मेरी सिस्टर की, जो कह रही थी, बचाओ बचाओ, भाई डूब रहे हैं। मैं ग्रेड 4 में था, शी वॉज ऑल्सो इन ग्रेड 4। शी वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट हेल्पलेस। थोड़ी देर बाद मुझे एक हाथ महसूस होता है। वो हाथ मुझे उस तालाब से बाहर निकाल के लाता है। बॉडी से पानी निकाला जाता है। थोड़ी देर मुझे साफ होने में टाइम लगता है। थोड़ी देर बाद जब मैं होश में आता हूँ, थोड़ा कॉन्शियस होता हूँ, मैं उस बचाने वाले की तरफ देखता हूँ और उनसे कहता हूँ, थैंक यू भैया, आपने मेरी जीवन बचा लिया, आपने मेरी जान बचा ली। बट भैया, ये बात मेरे घर पे मत बताइएगा, बहुत मार पड़ने वाली है। कुछ बेसिक जरूरी हिदायतें देने के बाद उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मेरे लिए भगवत गीता के रूप में बन गई। आपका जीवन इस लायक था कि बचाया जा सके, इसलिए बचाया गया। और आप वाकई मुझे थैंक्स करना चाहते हैं, तो जब भी
कभी कोई व्यक्ति मुसीबत में दिखे, उसकी मदद के लिए बिना सोचे हाथ बढ़ा देना। मैं बहुत छोटा था, कुछ ज्ञान लगा, कुछ तथ्य लगा, बट ये सेंटेंस मेरे जीवन में इस तरह से घर कर गया कि आपका जीवन इस लायक है कि बचाया जा सके। कुछ स्पेशल जरूर है मुझ में, ये जरूर मुझे दिखने लगा। अच्छा दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, वरना कुछ लोग सेल्फी लेके डाल रहे होते, शायद मैं उस तालाब के अंदर डूब चुका होता। शुक्र है मोबाइल नहीं थे उस टाइम, तो लोगों के हाथ थे जिन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया। अच्छा, घर की हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहे थे, मदर हमारे साथ नहीं रहा करती थी और फाइनेंशियल हालत भी बहुत खराब थी। तो मेरा कुछ शेड्यूल ऐसा था कि मैं स्कूल से लौटने के बाद दोपहर में कुछ खाने के बाद घर के पास में ही एक कारखाना था जहां मोमबत्तियां बना करती थी, कैंडल, उसमें चाइल्ड लेबर का काम करता था। हर एक कैंडल के अंदर एक थ्रेड होता है, उस थ्रेड पे, उस कैंडल के अंदर डालने के मुझे 5 पैसे पर थ्रेड मिलता था। वो गरम खौलता हुआ सांचे में डाला जाता था वैक्स, और उसके अंदर मुझे उसी टाइम पे थ्रेड डालना होता था। शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे जब भी सुपरवाइजर की परमिशन होती थी, हम घर आते थे। घर आते समय अक्सर मेरे हाथ में 3 चीजें होती थी। वेस्ट, जो कारखाने के काम ना आने वाला जो वैक्स होता था, मोम होता था, जिसमें काफी सारे धागे होते थे जो खराब हो चुका था वो। उसी कारखाने में एक पार्ट पे दलिया बना करता था, तो कुछ दलिया और मेरे उस दिन के कमाए हुए पैसे। वो बचा खुचा जो मोम, जो वेस्ट मोम होता था, वैक्स होता था, उसका मैं क्या करता था आपको बताता हूँ। वो बहुत जरूरी था मेरी लाइफ में। हमने कई साल, लगभग 3-4 साल उस वैक्स के ऊपर रख के खाना बनाया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम खाना बना सकें, हम लकड़ी ला सकें, हम कोयला खरीद सकें, तो हम उस वैक्स के ऊपर, उसको चूल्हे में रख के हम उसके ऊपर अपना खाना बनाया करते थे। थोड़ा स्लो, थोड़ा सा बदबूदार खाना बनता था, बट खाना बनता था। जिंदगी चलती जा रही थी। ये समझ में आ गया था दोस्तों कि ये जो सर्वाइवल की लड़ाई में लड़ रहा हूं ना, ये मेरी जिंदगी पलटने वाली नहीं है। सपने बहुत बड़े थे मेरे जीवन के, लेकिन सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने वाला इंसान सिर्फ सर्वाइव करता है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपनी ऑर्बिट चेंज करनी ही पड़ेगी। आई डिसाइडेड आई विल नॉट लिव दिस लाइफ, बट हाथ में कुछ नहीं था। टाइम बदलता जा रहा था, धीरे 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 आगे बढ़ा। 12th में पहुंचा किसी तरह से पढ़ाई करते हुए, और पिज्जा हट में नौकरी कर ली। हाँ, जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती ना, उनको पिज्जा हट में जॉब मिल जाती है। ये पिज्जा हट की ग्रेटनेस है। वहां पे मुझे जॉब जो मिली, वहां पे मैं झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, मॉपिंग करता था, जूठी प्लेट्स उठा के अंदर जाके वॉश करता था, और मेक टेबल के ऊपर डो बनाया करता था। दैट वाज माय जॉब। वहां पे मैं उस टाइम देखा करता था कि लोग एक टाइम के मील के लिए 3,000, 3,500, 2,000 रुपए खर्च कर देते हैं। इसका मतलब सक्सेसफुल लोग आपके आसपास ही रहते हैं, वो पैसे वाले लोग आपके आसपास ही रहते हैं जिसकी आकांक्षा श्रीवास्तव तुम्हें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सफलता कहीं बहुत दूर नहीं है। तो व्हाट इज मिसिंग इन मी, और उन लोगों के पास ऐसा क्या है? देन आई रियलाइज कि उनका सर्कल अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके पास जीवन जीने का नजरिया अलग है, और वो नजरिया मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली की अप्रोच से बाहर आना पड़ेगा। और इसमें मुझे बहुत हेल्प की थी रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक में, जो मुझे शायद किसी ने रेकमेंड की थी। वहां से मैंने जिंदगी में सोचा कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। और पैसा आप कहाँ कमा सकते हैं? जहां पैसा होता है। पैसा कहाँ होता है? बैंक्स में। सो मैंने बैंक में सेल्स की नौकरी पकड़ ली ग्रेजुएशन आते आते। ग्रेजुएशन में आने के बाद मैं बैंक में सेल्स की नौकरी कर रहा था, जहां लोगों को मैं क्रेडिट कार्ड बेचा करता था, लोगों का इंश्योरेंस बेचा करता था, लोगों को मैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुलवाया करता था। अचानक मेरी जिंदगी में यू टर्न आता है। पहला सुखद यू टर्न था मेरे जीवन का वो, जिसमें मुझे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी इंश्योरेंस में एग्जीक्यूटिव लेवल पे हायर करती है, और मुझे भेज देते हैं वो देहरादून। देहरादून, हाँ, यही तो सपनों का शहर था मेरा।
जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा पास्ट, मेरी बैकग्राउंड, मेरी फैमिली हिस्ट्री, मेरी एकेडमिक्स, मेरे दोस्त, मेरे लोग, कोई नहीं थे वहां पे। उस शहर में मुझे सब कुछ नया बनाना था, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू लिव विद those people who are struggling to earn the money. I decided to live with those people who are having ample of money. मैंने अपना पूरा सर्कल ही बदल दिया। I earned handsome amount. मैंने शादी की देहरादून के अंदर, मैंने मकान बनाया, एक अच्छा अपर मिडिल क्लास पर्सन जो एक रीजनल हेड लेवल पे आज की डेट में काम कर रहा था, आज तक काम कर रहा था, एक बहुत सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, बहुत सक्सेसफुल सेल्स ट्रेनर बन के निकल के आया, जहां पे लोग कहते थे हाँ ये जिंदगी है, स्ट्रगल के साथ बाहर निकल के आया है लड़का। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दिल के अंदर ना एक कसक थी, ये लगता था कुछ मिसिंग है कांशु। सो कॉल्ड सक्सेसफुल होने के बाद भी आपके अंदर वो चीज नहीं है के लिए आप बने हैं। फिर मेरी जिंदगी है इतनी आसानी से तो कटेगी नहीं ना। अच्छा, मेरे साथ एकेडमिक बैकग्राउंड में या एजुकेशन फील्ड में रहने की वजह से मेरा जो भगवान है, मेरे जो टेस्टिंग, जो मेरे इवैल्यूएशन के लिए बैठते हैं, मेरे गॉड, वो अक्सर मुझे अगली क्लास में प्रमोट करने से पहले इस क्लास में पढ़ा हुआ टेस्ट नहीं लेते। वो अक्सर मेरे को नेक्स्ट क्लास में भेजने से पहले उसी क्लास का टेस्ट लेते हैं जिस क्लास में जाना है। तो मेरा इवैल्यूएशन का प्रोसेस ही अलग किया हुआ है भगवान ने। 18 फरवरी 2020 जिंदगी पलटने वाली थी। ट्रैवल कर रहा था, रास्ते रात हो गई तो रात में बरेली में रुक गया होटल में। सुबह उठा तो कमर में हल्का सा दर्द था। धीरे 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 वो दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने कार उठाई और मैं लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ मेरा एक इवेंट था। Sir, your mic is mute actually. Am I audible, sir? Hello, am I audible? Yes. Yeah. So मैं लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचने के बाद मैंने वो अपना इवेंट कंप्लीट किया। 3 दिन हो चुके थे, हालात बहुत खराब हो चुके थे। ये समझ में आने लगा था ये हेल्थ का डेटोरेशन कोई मजाक नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग। हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने मेरी एमआरआई की। एमआरआई में निकल के आता है मेरी बैकबोन में L1 से L4 के बीच 5 के बीच में एक सिस्ट है, जो धीरे 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 बड़ी हो रही है, जिसने मेरी पूरी बैकबोन को डिसलोकेट कर दिया है। एंड मेडिकल टर्म के अंदर या गूगल पे आप सर्च करके देखो तो मोस्टली सिस्ट का मीनिंग कैंसर माना जाता है। यही बात मुझे डॉक्टर साहब ने बोल दी, मिस्टर श्रीवास्तव, आई थिंक ये सिस्ट कैंसेरियस है और हमें आपका कैंसर को टेस्ट करना पड़ेगा। मेरा बोन मेरो टेस्ट हुआ, बहुत बहुत पेनफुल टेस्ट होता है। काफी सारे मेडिकल टेस्ट हुए के बाद वो रिपोर्ट्स आई। लेकिन जिस समय डॉक्टर साहब ने मुझसे बोला कि मुझे लगता है आपको कैंसर है, मेरे सामने अंधेरा छा चुका था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था। एक 8 साल की बेटी का बाप, यंग 38 इयर्स, कैंसर। लखनऊ में फ्लैट में रहता था अकेला, फैमिली हल्द्वानी में रहती थी। घर आया, फ्लैट में किसी तरह ऊपर पहुंचा, डॉक्टर ने कुछ पेन किलर्स दिए थे, उनके सहारे खाना शुरू किया। 2 दिन बाद आई रियलाइज्ड कि मेरा राइट लेग इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ कनेक्शन टू द बॉडी। हालात ये हो गए थे दोस्तों कि मेरा पूरा शरीर पेन में था और कई बार नेचर कॉल जैसी चीजें भी बेड पे हो जाया करती थी। हालात बहुत खराब हो चुके थे। और एक रात जब मैं लेटे लेटे ये इंतजार कर रहा था किस दिन मरूंगा, मेरे कानों में वही शब्द गूंजे, तुम्हारी जिंदगी इस लायक थी कि बचाई जा सके, इसलिए बचाई गई। मैंने अपनी जिंदगी में वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया आई रिफ्यूज टू डाई ऑन दैट पर्टिकुलर बेड। मैंने कहा मैं इस तरह से अपनी जिंदगी से, इस ग्लोब से, इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का पर्पस अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने कुछ लोगों को फोन किया, कुछ दोस्तों को फोन किए, अपना लखनऊ से बैगेज पैक किया, एक ड्राइवर हायर किया एंड आई रीच माय होम टाउन बैक हल्द्वानी। 3 महीने ऑलमोस्ट आई वाज इन बेड।
सीधा पड़ा हुआ था। कई डॉक्टर से बात हो रही थी, कई जगह मुझे एम्बुलेंस से लेके जाते थे, लेके आया जाता था, चेकअप चल रहे थे। पता चलता था कोई डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई बोल रहा है पैरालिटिकल अटैक हो सकता है, कोई बोला जीवन जा सकता है, एंड मैं कह रहा था मैं मरूंगा नहीं बॉस, मेरे लाइफ में आने का पर्पस पूरा नहीं हुआ है। थैंक गॉड सही ट्रीटमेंट मिला, धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। 23 अप्रैल 2020 मुझे मेरे जीवन का मिशन मिल चुका था। मैंने पहली बार अपना मोबाइल फोन उठाया, बेड पे आधे लेटे लेटे मैंने फेसबुक लाइव किया और लोगों को यह बताने की कोशिश की कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। हो सकता है सिंपैथी की वजह से, हो सकता है मेरी मेडिकल कंडीशन देखने की वजह से, लेकिन वो वीडियो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लोगों ने मुझे बहुत लाइक किया, लोगों ने मुझे बहुत डिमांड की सर इस तरह की वीडियो और बनाइए, एंड मुझे पता चल चुका था मेरे जीवन का विजन और मिशन क्या है। जिस तरह से मैंने अपने जीवन में सेक्सुअल हैरेसमेंट झेला उस फैक्ट्री के अंदर, जिस तरह से मैंने उस फैक्ट्री के अंदर चाइल्ड लेबर का काम किया, जिस तरह से मैंने पैसे के लिए अपने आप को लोगों के सामने हाथ फैलाते देखा, आई डिसाइडेड टू वर्क विद अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। 6 महीने वेबिनार के थ्रू स्कूल्स को टारगेट करके लोगों से बात करके मैंने पुलिस वाले, मैंने हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेस, हॉस्पिटल में काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर, मोर्चरी में काम करने वाले स्वीपर्स, नगर निगम में काम करने वाले स्वीपर्स, इनके साथ पेरेंटिंग वर्कशॉप्स किए वर्चुअली और उनको ये बताने की कोशिश की कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनके जीवन को किससे सुधारना है, उनके जीवन में आप किस तरह से एक मिशन और विजन दे सकते हैं। एंड दिस हैज बिकम माय विजन एंड मिशन माय लाइफ नाउ। 6 महीने के अंदर धीरे धीरे मेरी हालत भी ठीक हो चुकी थी, मेडिकली मैं थोड़ा सा ठीक हो गया था, 1 से 1.5 किलोमीटर चलने लगा था, कुछ होल्ड करके स्टिक वगैरह, लेकिन धीरे धीरे मैं लाइफ में वापस आ रहा था। मेरा विजन, मेरा मिशन, मेरे लोग मेरे साथ आने लगे थे, लोग मेरे साथ जुड़ने लगे थे। आई डिसाइडेड टू क्विट माय कॉर्पोरेट लाइफ, बट जीवन है मेरा, इतनी आसान कहाँ है बॉस। जिस दिन मैंने डिसाइड किया मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा, उसके 3 दिन बाद मेरे फादर साहब को हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल लेके गए उनको, हॉस्पिटल लेके जाने के बाद देन वी रियलाइज कि उनको हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक भी है, एंड उस प्रेशर में ही लॉस्ट हिज आईसाइट। अब कुछ चक्कर न्यूरोलॉजिस्ट के लगते थे, कुछ हार्ट के लगते थे और कुछ आईज वाले के लगते थे। मेरी खुद की हालत आप लोगों को पता ही है। अगेन जितना पैसा कमाया था धीरे धीरे या तो किश्तों में जा रहा था या मेडिकल एक्सपेंसेस में जा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं दोबारा उसी ट्रैप में फंस चुका हूं जिसका नाम है रेस ऑफ सर्वाइवल। मैं उस तरह से जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं बचपन में जी चुका था वो जिंदगी। मुझे सर्वाइवल वाली जिंदगी नहीं जीनी थी। मुझे अब अपने मिशन और विजन से हिलना नहीं था, लेकिन मजबूर हो चुका था। किसी तरह से फादर साहब को संभाला, फैमिली को संभाला। जब आपके इंटेंशन अच्छे होते हैं तो आपके पास लोग जुड़ना शुरू करते हैं। मेरे मेंटोर्स मुझे मिलना शुरू हुए जिन्होंने मेरे बिजनेस मॉडल को वैलिडेट किया। मेरे लाइफ में मिस्टर मनीष, एक मेरी फ्रेंड अश्मिता है, जिन्होंने उस डिप्रेशन से मुझे निकाला, मुझे उस टफ टाइम में उस टाइम पे सपोर्ट किया जब मैं अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट लूज करने की वर्ज पे खड़ा हुआ था। फाइनेंशियली दोबारा ब्रेकडाउन पे आ चुका था, जिंदगी दोबारा नीचे गिर रही थी और वो वी कब बनेगा मुझे पता नहीं चल रहा था। उस वी का ग्राफ कब उठना शुरू होगा मुझे पता नहीं चल रहा था। बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करवाया, लोगों से काम शुरू किया, लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट मिलता ही चला जा रहा था। अचानक ऑन 1st of April I decided this year 2021, नो बॉस, मैं ना तो अपनी कंपनी को सपोर्ट कर पा रहा हूं, ना मैं अपने विजन एंड मिशन को फुलफिल कर पा रहा हूं। मुझे एक तरफ होना ही होगा और मुझे कॉर्पोरेट लाइफ छोड़नी है। आई रिजाइंड ऑन 1st of April 2021 फ्रॉम माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मैं आज रीजनल हेड की पोजीशन में वर्क कर रहा था। जिस दिन मैंने वो डिसाइड किया रिजाइन करने का, उसके 5 दिन बाद मुझे कोविड हो चुका था। क्या करें, जो जिंदगी अगली क्लास में मुझे भेजना था, जिस ऑर्बिट में भेजना था, मेरा फ्यूल तो पंप उसने बर्न करना ही था। किसी तरह से बाहर निकल के आया, दोबारा पता चला
कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुके हैं। RT-PCR मेरा जो टेस्ट आया उसके अंदर CT वैल्यू मेरी 14 निकली। दोबारा मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। जो 25 तारीख को जो रिपोर्ट आई तो मैं दोबारा CT रिपोर्ट 14 के साथ क्वारंटाइन कर दिया गया। रिजाइन कर चुका था, फाइनेंशियली ब्रोक डाउन हो चुका था, नया बिजनेस मॉडल रन करना जा रहा था, शुरुआत करने जा रहा था, थोड़ा बहुत बचा हुआ पैसा या तो अब हॉस्पिटल में लग रहा था। क्वारंटाइन हूं, आज भी क्वारंटाइन हूं, मैं क्वारंटाइन हूं दोस्तों, मेरे हौसले क्वारंटाइन नहीं है। मैंने जॉब छोड़ी है, मैंने अपने हौसलों को नहीं छोड़ा है। आज शाम 6 बजे उस कंपनी में मेरा लास्ट वर्किंग डे था। और देखिए, जब आपको कोई जिंदगी में कुछ देना चाहता है, जब आपसे आपकी जिंदगी आपसे कुछ नया करवाना चाहती है, तो शाम 6 बजे आपसे अगर आपकी जॉब जाती है तो शाम को 7 बजे आपको टेडेक्स जैसे मंचों से न्योता भी आता है कि आइए और बात कीजिए, अपनी नई जिंदगी शुरुआत कीजिए। मैं हर उस व्यक्ति को थैंक्स करना चाहता हूं, हर उस पेरेंट को थैंक्स करना चाहता हूं जिसने मुझे इस बात पे भरोसा किया कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे बच्चों के जीवन में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, आज तक पिछले 1 साल में 1,25,000 से ज्यादा पेरेंट्स को मैं ट्रेंड कर चुका हूं, 12,000 से ज्यादा टीचर्स को मैं ट्रेंड कर चुका हूं, और मेरे जीवन का जो मिशन और विजन है, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल, बाय 2025 मैं 1 मिलियन से ज्यादा हैप्पी पेरेंट्स क्रिएट करना चाहता हूं। अगर आप में से कोई मेरी जिंदगी में मेरे साथ इस मिशन में जुड़ना चाहता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, अपने बच्चे को रोड साइड एक्सपोज करके चलता देखें, प्लीज उसके पास जाइए, हाथ जोड़िए, अपना परिचय दीजिए और बोलिए, सर आपने इस बच्चे को गलत साइड पकड़ा हुआ है, ये रोड साइड एक्सपोज हो रहा है, ये देश का एसेट है, आप इस एसेट को इस तरह से कैरी नहीं कर सकते, ये एक्सीडेंट की तरफ प्रोन हो सकता है, रिक्वेस्टिंग यू टू आप इसको ऑफ रोड साइड ले लीजिए जहां पे वो सेफ रहेगा। इस छोटे से काम से भी दोस्तों आप मेरे मिशन में जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने अपनी कंपनी खोली है लीड योर लक, जिसके साथ मैं 1 मिलियन पेरेंट तक पहुंचने का प्रण ले चुका हूं, उनकी जीवन को बदलने का प्रण ले चुका हूं। आप लोगों का साथ चाहिए। और दोस्तों, मैं अपनी बात को सब एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा। राहत अंदौई साहब का शेर है, सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहें जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहें जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। Thank you, Akankshu sir. That was really strong. He gave us a beautiful message that it depends only on our mode, how we accept our challenges and use them as ladders to reach success. Now we have a mellifluous melody titled Kalang by Malvika Arya, student of Government Doon Medical College, batch 2017.
That was really euphonic. Moving to our next speaker. Ignorance is not a bliss, it's a disease. It's a quote by our next speaker, which she has used as a mantra to attain success in her life. While she is an author by profession, after working on herself and getting to learn from world class mentors and leaders, her entire thinking process has undergone a paradigm shift to where she is today. It's okay to have problems in life, but not okay to stay in that situation forever. With this message, she helps people to get them from where they are to where they want to be. Today, she'll be sharing her ideas of life with us. So please welcome Sundar Sarkar. Thank you, Aditi. It was the time when demonetization was announced. I was all set for my another solo trip to a place called Hampi in Karnataka. I got a call from my home asking me to check the news. I thought it's just some rumor. And honestly, I did not know what demonetization is at that point of time and what could be the after effect of it in reality. So the night I was packing my stuffs, I had thought of withdrawing the required amount of cash either that night or the next day before I start off the journey. Little did I know what the scenario was outside post the announcement. I went out to withdraw the required amount of cash that night, and the scene was nothing less than a chaos. People had gathered from all across and queued up outside all the ATMs, and there was panic, urgency, and fun as well. People were peeking over the shoulder of one another to get a glimpse of the ATM machine and just praying, Dear God, please let not the cash run out at this machine, at least till my turn. One of my friends also called me and she said that she came to know how much money her mom had and she was angry about it because when she used to ask her mom for pocket money, she did not give, but now all the cash was coming out. All these things were happening all around: panic, urgency, laughter. But in my mind, I had only one thought: how am I going to travel to Hampi without the required money? Reason? At that point of time, there was only one ATM, which was also approx like 10 kilometers away from the main place. And in most of the places, they preferred to take cash. And that was a huge and challenging problem for me. There was a loud tug of war going on in my head. First, I was traveling via bus. Second, I was having no such cash for the entire trip and also as a backup. And third, I was traveling solo. So I had only two options in front of me, out of which I needed to choose one: either cancel my trip and stay at home, or start the journey and see what happens. And to my surprise, I chose the second option. I had only the amount of cash to just cover my bus fare and the food for one day. The accommodation, thankfully, I had booked online, and that was a relief. I stood in the ATM queue and managed to get rupees 100 note because the cash ran out in that machine. In all other places, the queue in the ATM was not just huge, but also the cash ran out very quickly, and the same story was everywhere. My heart was beating fast, and I could not sleep that night. Oh, and yes, of course, I did not tell anything to my family as unnecessarily they would panic, and I was staying alone that time. I packed my bags, and next day I set foot on my chosen problem as I began the journey. When I reached Hampi, needless to say, there was no cash available, and there was chaos everywhere, and the same story, just like that. In this trip, I specifically learned two things which made me realize of the fact that the idea, when I choose my problems in my life, I am able to choose the life I want, because then I got the power to experience it in my own way. The first thing I realized is that people are not bad at all, as we have learned from the media, the movies, news, etc. I used to hear since my childhood, be careful, never travel alone. People will take advantage of you. Don't talk to strangers, etc. In my solo trips, however, I learned
one thing for sure: people are just like me. How I treat them, they treat me. The fears that I have, they have too. The safety and security that I want, they want the same thing. In fact, the love, support, cooperation, help that I received from strangers over the years is immense. And the second thing I learned was that even when I did not have the means to travel safely in terms of finance and backup in this trip, this was one of the most memorable trips because I was experiencing in it a completely different spectrum. Let me explain. The easy way out for me was to just simply cancel the trip and stay at home. But there was a problem in front of me at that time. I chose to take up the problem, go ahead with it, and design it accordingly to choose the life I want. Because the way I see things after that changed completely. So is my thought process, behavior, and the results in my life. When I was in school as a kid, I saw that some of the parents of my friends used to come and tie the shoelaces of my friends when we used to wait at the bus stop for the bus to come. I wondered sometimes, why do my parents never tie my shoelace? I don't even remember when was the last time they did actually. Even for my tiffin, most of the time I had to pack it myself. Strange, isn't it? In a country where we are brought up in an environment of protection, or let me say as overprotection and helicopter parenting, where there is an opinion and permission needed for what clothes to wear, what subjects to choose for career, whom to choose as life partner, what name to be given to a newborn child, and the list goes on. There is no time, no limit to the extent of the involvement of parents have in their children's lives, thinking of them as their own extension rather than an individual, unique human being. What they think as a problem for the child is actually the answer and the solutions to many of the real world problems the child is going to face in his or her life. And when the time comes, that grown up kid does not even have any clue as to how to deal with such problems. We are asked to choose the dress, but only from a selected range of clothes. We are asked to choose a career, but only from some esteemed options like medical, engineering, MBA, etc. We are asked to choose bride or groom, but only from a selected group of caste, status, etc. And many of us never even have these choices, by the way. We strive for better health, better relationship, better career, better life through a convenient way. And nothing right or wrong in that, by the way. I did the same thing just like everybody else: conventional schooling, college, then a job in a good MNC. Working in the IT industry for around 8 to 9 years, trusting some friends and known people gave me some really good reality checks in life. Going into a heavy financial debt of more than rupees 25 lakhs, being suicidal, running to and fro in the police station, trying to get back the money that I took as a loan from the bank to help the so called friends, which later on I came to know as a fraud case, opened a whole new world in front of me. A world where I was not just able to quit my job, but also become the best selling author of my book, 7 Steps from Shame to Being Back in the Game, launching my podcast and interviewing people from across the globe and bringing out their stories, their contributions in my podcast, Intensify Humanity, bringing out the success stories and the challenges and the methodologies of self growth and self improvement of a person in my Intensify Life magazine, mentoring people from various backgrounds in my Intensify Life Mastermind program and Passionpreneur Mastermind program with my mentor, and so on. But the problems that I was cursing about at that point of time in my life were thrown on my path, which I did not choose. But what I chose was the problem post that event of my heavy financial, emotional, and mental crisis. The idea that I'm already a broke,
give birth to another idea in my mind. What if I choose the problem that is there in front of me to choose the life I want? And then it all started. Out of so many things that were happening in my life at that point of time, easily it could be termed as being unlucky, poor girl, life happens, etc., etc. So I chose a problem and then another problem and then another. And what I did with those is how I shaped and designed my life from that point of time. So let's take an example. You have relationship issues, health issues, family issues. Pick anyone to begin with. Okay. So let's take finance issues. Till now, you might have been complaining about your money or financial problems, but let's choose that specifically right now. So you choose and accept the fact that your finance is not in good shape. First, it gives you the realization that there is a problem and you are choosing it voluntarily. Second, it allows you to see past the haziness and the fog due to your crying, cribbing, blaming, and complaining. Then instead of blaming your boss, your government, your spouse, your parents, your dog, your neighbor about the status of your poor bank balance, you actually take the full ownership. Result: you take the complete power in your own hands. Once you actually do this, there is a shift that happens within you. Now you know that the ball is in your court and you can hit it in any direction you want to. So then you start taking steps one by one. You decide on what are the things you can do through your skills, through your passion, through your talent that can solve any problem in the marketplace for somebody, and in return, you will get paid. When your brain starts working in this particular direction of solving a problem for someone in the marketplace, then you will see that all doors open up one by one. Means not just the idea, but the path as well. In short, when we choose our problems, take the ownership, we know exactly what we are gearing up for because the next step is then decided by us. Mark Manson, in his book, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, drives home this same point. And to quote him, let me share. Imagine that somebody puts a gun to your head and tells you that you have to run 26.2 miles in under 5 hours, or else he'll kill you and your entire family. That would suck. Now imagine you bought cute shoes and running gear, trained religiously for months, and completed your first marathon with all your closest family and friends cheering you at the finish line. That could potentially be one of the proudest moments of your life. Exact same 26.2 miles, exact same person running them, exact same pain coursing through your exact same legs. But when you choose it freely and prepared for it, it was a glorious and important milestone in your life. When it was forced upon you against your will, it was one of the most terrifying and painful experiences of your life. No one has a perfect life. Everybody has their own set of problems. We need to know how to take that problem voluntarily, mold it, and design the life we want. Now, after several kinds of experiences and experiments that I have gone through till now, and how I molded my life to choose the life I want, there is a very simple method which I personally devised, tested, experienced, and found useful enough to make a shift in my life. The idea which actually led me to not just think, but also do things, take action in a manner which I never thought was possible given the position I was in life. And that idea, I call it as courage. Easy to remember, but with a great weightage to it. And if I break down, it stands for C for cleanse, O for opportunity, U for utilize, R for relearn, A for analyze, G for goals, and E for emulate. Once you have chosen the problem, all you need to do as the next step is work towards that idea, which will help you to choose the life you want. Now, let's see one by one what these mean. Okay, so C stands for cleanse. Imagine you want to paint, you want to bring beautiful furnitures to your home and you want to paint your home with fresh paint. Okay,
What you do before that? You simply clean it properly, isn't it? Similarly, when you want new, better, and positive things to come to your life, you need to let go of the negativity and toxic things from your life. Get rid of the myths and limiting beliefs. Next, O stands for opportunities. When there is a problem in front of you, or you choose a problem voluntarily, that is the time when you need to look for the opportunities. Because all the problems you have some kind of the hidden meaning, and those hidden meanings have some sort of opportunities. Decoding the hidden meaning is all it takes to kickstart your new journey and to design the life the way you want. U stands for utilize. Once you have identified the opportunity, utilize every possible skills you have, talent and resources towards it. And the biggest problem, possible resource is what everybody has, that is the mind. Utilizing it to the fullest potential is your responsibility. R stands for relearn. Since childhood, we have been fed with so many information. It's time to unlearn and relearn. A stands for analyze. When you start doing something new, it's very easy to get lost in the process. It's time to take a pause, analyze, and find out to course correct whether you are on the right track or not. And maybe this is the time to get some guidance from a mentor or a coach. So analyze and then decide. G stands for goal. Personally, setting short term and long term goals have helped me a lot. Imagine you start a car and you don't know where you are going. Chances are you are going round and round in circular motion. Hence, set a direction, set your goals. And E stands for emulate. This is one of the best and simplest way. Simple. If you want to come out from your problem, follow a person who have been there, done that. Most importantly, emulate the mindset and the actions taken by them. Because when you know how to choose a problem and make it work in your favor for your better life, then nothing like it. And that's why I believe that when life itself is temporary, how can problems be permanent? And that's why I believe that when you can intensify your thoughts, your action, your behavior in the right direction, you can intensify your life as well. And that's why my mission and vision is to intensify life and intensify humanity on this planet. So let us choose our problems to choose the life we want. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I hope that lets us all know a few things about courage and how to live our life with courage. So, moving on, there are just two talks remaining in this event. I am Raghav, and I will be there with you for the rest of the event. Now, there is something called as Fragile X. Now, I, like many of you, I never heard about it, to be honest. The only time I heard about it was during this event. And that being a medical student isn't a very good thing. But there are two things you must understand that like any disease, this one also has two components, objective and subjective. Now, what we can do is by Googling it or anything, if we can know the objective component of it, like how we see it or how it can be treated. But it is something which affects many people. It is one of the major causes of autism, and how it affects people is something that isn't possible to know by just hitting here and Googling it. So the subjective component is way beyond than the normal uh, effects of that disease. Shalini Kedia, she is chairperson and founder of Fragile X Society of India. Uh, she will be giving us a talk to raise awareness about this issue. And It was an early morning, 2007. At 9 o'clock, my phone rang. I answered it. On the other side was a woman.
crying unconsolably, and she just kept weeping. Ma'am, I need to test my fetus. I'm 8 weeks pregnant. I had to wait till she could gather herself and we could have a meaningful conversation. She says, Ma'am, I'm 8 weeks pregnant and I need to test my fetus whether it's affected with Fragile X syndrome. This was a rude shock and a sudden shock. I said, Why? Why is it that at 8 weeks you are panicking and you want to test your fetus? What is it? As the story unfolded, her sister had a son with autism who was 4 years old. And for all these years, she had told the family that her son has autism. But one night prior to this phone call, she told her sister, my son actually has Fragile X syndrome. He does not have autism. And Fragile X is an inherited condition. It's a genetic condition. I am a carrier for it. And there are very high chances that you are a carrier too. So please test the fetus. This was too much for that woman. First, her sister not telling her anything. And now she needing to know whether she would be able to keep the baby or not. At 8 weeks, we first had to test the mother to know whether she is a carrier for the Fragile X mutation before we could proceed to test the fetus. The mother's reports took 4 weeks. It's 12 weeks pregnant. And it turned out she is a carrier for Fragile X. That gave us the permission to probe further and test the fetus. The fetus sample was sent for testing. It takes another 4 weeks. This woman has spent 16 weeks with this fetus in her womb. The first 8 weeks full of joy, dreams, happiness, and everything a mother wants. And the next 8 weeks with fear, agony, and tears. The reports came in. She was carrying a male child who was affected with Fragile X syndrome. She was shattered. She was shattered beyond words I can explain. She took a very conscious decision to abort the child. She had seen her sister struggle with the sister's son. She had seen what life they had to live. She did not want to choose the same for herself and the unborn baby. At 16 weeks pregnancy, she aborted the child. Along with the child, she aborted her dreams. She aborted every future thought, hope, and happiness she had for her child. Why did the sister hide this from her? Why did she not tell the family the truth? He was 4 years old and she hid it for 4 years. Was it because of the stigma of an inherited genetic condition? Or was it the fear of her family being ostracized? Or was it because she did not want anyone else in the family to feel the blame or to know about it? These are questions and are still questions. Nobody could ever find an answer for it. Fragile X syndrome is an inherited condition. It's passed down silently through generations. Fragile X can cause
intellectual disability, and autism. Very often, Fragile X is misdiagnosed as autism, and that is what makes it even more important to spread awareness about Fragile X. It's very interesting as to how Fragile X got its name. We all have our chromosomes. The X chromosome carries the FMR1 gene, which is responsible for Fragile X. And when you look at it under the microscope, it actually looks like it's kind of broken or hanging with threads. And that's how this condition got its name of Fragile X syndrome. At present, there is no cure for Fragile X syndrome, but there are a lot of treatments, and only early intervention can help a child get the treatment. We've seen children who've been diagnosed at the age of 10 and have lived with an incorrect diagnosis for that long a period. I started this organization in 2003 with a simple goal of supporting families whose children are affected with Fragile X syndrome. I would spend 2 hours speaking to the families, probably 3 or 4 families in a month. All our conversations would revolve around trying to understand these 2 words and how it has changed their life, their world, their dreams. How does someone who's not from a medical background understand the intensity of something like this? How easy is it to tell a mother there is a gene that stopped working and is not going to produce a protein which your child needs for brain development? So you need to go for innumerable therapies and help your child achieve those milestones which every other child just achieves. It's not easy, but we've done that and continue doing so. Over the years, the number of families we saw kept growing. We grew a network, we connected families. It's important to give them the support and have another shoulder to cry on. Then we came across families with 2, 3, and believe me, 4 children affected with Fragile X syndrome. Yeah, it sounds impossible. Even I thought so. The first child only had a speech delay. The second showed signs of autism. The third was termed as badly brought up. And when the fourth child was severely impacted is when the doctor studied the condition and realized he's got Fragile X syndrome. They tested all the other siblings and they all 4 had Fragile X syndrome. Could this scenario for this family have been different if there was more awareness for this condition? Why is Fragile X so difficult? The gene responsible for Fragile X was only discovered in the year 1991, and that is 30 years, which is a very short period of time for doctors to have even understood the different manifestations of the gene and to spread awareness about it. Throughout the world, there are 33 organizations working towards creating awareness for Fragile X. In India, we have a population close to all of the United States, Europe, and a few more countries. And we only have one little organization working to create awareness on this condition. Why is awareness important? Awareness brings inclusion, acceptance. Ask the mother who had to abort a 16-week fetus the importance of awareness.
My favorite quote that I resonate with is that by Mother Teresa. I may not be able to change the world, but I can cast a stone in the water and create ripples. I take this a step forward and say, y'all can create the waves. We need waves of awareness in India, and that y'all can help us achieve. Help us achieve awareness for Fragile X, support our cause. There are many ways you can do that in. Of course, social media has been an amazing platform to spread awareness, and we have seen the result of awareness. We have seen families where, after the first child is diagnosed, they take a conscious decision and plan what they want to do for their second child. We probably cannot live the life of a family who has Fragile X syndrome. Of course, we can support it. Estimatedly, 1 in 5,000 children around the world have Fragile X syndrome, and that makes it close to 4 lakh individuals in India alone. So let's get together and spread awareness for Fragile X. Thank you. Thank you, ma'am. I think we all learned a bit about Fragile X and quite a bit more about the people who are suffering from it. And I wish that in the near future, there will be more awareness about the condition. Moving on, before we have our talk, we have someone who's a friend, a team member, and a talented poet. Mahima Gangwa has a few lines for all of us. Mahima? देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता. Hello everyone, my name is Mahima Gangwar and I am going to recite a poem written by Sarveshwar Dayal Saxena. यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें जल रही हैं, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना. देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, जिसके एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से साबित बने. नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह रखें, अनमने. और यदि तुम यह नहीं मानते, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं. इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न कागज पर लिखी हुई कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के नीचे गाड़ी जा सकती है. वो विवेक जो खड़ा हो लाशों को टेक, क्या अंधा है? जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है. यदि तुम यह नहीं मानते, एक क्षण मुझे तुम्हें नहीं सकता. याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों पर चिथड़ा हुआ शरीर शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का. ऐसा खून बहकर धरती में जख्म नहीं होता, बल्कि आसमान में फहराते हुए झंडों को काला करता है. जिस धरती पर
फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, यदि ऐसी धरती तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो कि तुम बंजर हो गए। यहाँ सांस लेने तक का नहीं तुम्हें अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा है सांस। आखिरी बात एकदम साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो, चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का सनातन पहरेदार, क्योंकि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। थैंक यू। With those touching words, let's move forward. Our last talk is about something we all know, or maybe not. It's about something we all talk about a lot. What was that thing? I think it was something called as God. I don't know him, maybe it's a her, maybe it was there, maybe it wasn't. There are so many questions surrounding God or divinity, but the answers, they might be too complicated for some of us to understand. Our next speaker, Deepak Well, he is an author and a social activist, and today he will be talking about the divine legacy. Thank you, Let's see. Raghav. Thank you. Just give me 1 second, 1 minute. I'd like to sit in silence before I give my talk. Thank you. Thank you. I am no God. I am no guru. I am no sannyasi. I am a married person. I have a wife. I have children. And I have grandchildren also. For the last 16 years, I have been practicing Raja Yoga at the Godly University. I have 30 years of secretarial experience. Before 2004, a few years earlier, my situation became very bad, miserable. I was mentally, physically, financially very down, very low. And at that time, I had to communicate with God. I said, kindly change this situation. I want you to change this situation, bring back my happiness, bring back my life. So he said, okay, fine. I'll do it for you. But you also have to do something for me. I said, okay, fine, I'll do it. No problem.
He said, you study at this godly university and then go and tell to the people. I said, no problem. From day one, I started my studies under the guidance of God. 2 years ago, 3 years, everything changed. My life was smooth again, and I continued my studies. Just 1 hour daily, I study at the Godly University, 365 days in a year. So what I'm here to tell you is that India is the land of God. India is the birthplace of God. To prove this, we must have seen statues, a lot of statues like of Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Vallabhbhai Patel, and many more. What does this indicate? This indicates they were here. They were very much live. And they did something for which the people remember them through the statue. If we go little more behind, say 300 years, 500 years back, there was Rani Jhansi, Maharana Pratap, King Shivaji. We see their statue. It means they were there. Then we go more 2000 years behind, you'll find India has millions of temples. And there are no statues, there are idols of deities. Idol of Sri Lakshmi Narayan, idols of Sri Ram, Sri Krishna, Hanumanji, and many more. Santoshi Mata, Mata Sherawali, like that. Some temples are very rich because a lot of public go there. And there are some temples on a hillside or somewhere in the remote where there's no public. Hardly few visitors go there. Why is that? We all bow before the deities, but we are not aware where are they, whether they were here or not. So this is my point here. There is a hidden history of India, not known to all. There is a hidden history of the world. We have studied the history from the times the kings came to India. Mughals. Why they came to India? Because India was known to be the golden sparrow. Sone ki chidiya. India was very rich. Gold, diamonds, jewels. But Mughals looted it. Britishers took away. However, the legacy is yet to unfold. The legacy of India, the legacy of deityism, it is yet to unfold. India is still rich in its contents as per the
Bhagavad Gita. We have so many things. We have Sikh, Hindu, Muslim, Isai. We have Bible, we have Quran, we have Gita, and whatnot. So these temples indicate the deities were here on earth. But when they were here, nobody knows. However, there is a hidden history. If we go beyond the study of the kings, before the kings came, before the king rule started, India was considered to be paradise. The deities were very much here in India. But how and why did they come in the paradise? Mainly the Shri Lakshmi, Shri Narayan. They ruled the Satya. And then comes Shri Ram and Shri Sita. They ruled Treta Yuga. Satyug and Treta Yuga history is not known to human. It is only God who tells us. However, God is not in a human form. He is the higher energy, the supreme soul. I am body. The name is Deepak Behal. But the soul inside me does not have a name. It is only the Shiv who has a name for the soul. And all my teachings, all my studies, which I've been doing under the guidance of God, has given me real peace. Today, it is the Tamopradhan society. Tamopradhan means the people, whether in India or in other countries abroad, they suffer in pain and sorrow. Why? There are two things. One is the golden period, Satyug and Treta, not known to human beings. But Dwapar and Kalyug is known to human beings. And we are at the lowest ebb because now we suffer in pain and sorrow because of the karma of the human beings. Where we are today is the result of our karma. For this, please allow me to tell you a short story about a baby elephant. Our story, our human beings on this earth, it resembles the story with the baby elephant. This Dwapar and Kalyug is controlled by Mayavi Ravan. Ravan is a collective name. Ravan is not a human being. It's a collective name given to the vices. Vices, ego, anger, lust, greed, attraction, attachment, hatred, jealousy, lethargy, fear. These are vices. And everyone is under the influence of these vices. And hence, whatever the karma we do ends up in a bad result, ends up in pain and sorrow. The human being is suffering today only because of these vices. So the Godly University, the education that helps us is the how to get rid of these vices and lead a peaceful life. The baby elephant
is usually trained by a mahant. Mahant, they train baby elephant by tying its leg with a pole and the chain. The leg is tied with the chain. The baby elephant is unable to move or break the chain, and for months together, he has to live there, sit there, drink there, eat there at one place. So now what happens is the elephant grows up like a strong elephant. He is taken out for the work to be done in the jungle. The elephant uproots the trees and lift the log and bring to the store. That's the daily routine it has to do. When it comes back, the mahant ties a thin rope to the leg of the elephant. That elephant does not try to break the thin rope. In spite of numerous power he has, he is unable to break. And he stays there forever, for the whole life. But we human beings have been given special divine powers. If God has divine powers, we too have divine powers, because God is not only the spiritual being, the supreme soul, but he is our Father. We, the human beings on this earth, are his children. We came here to play the drama, this worldly drama which is going on. But in between, during the interval, the Mayavi Ravan takes over. And due to the vices, ego, hate, jealousy, lust, greed, anger, the karma goes wrong, and thus we suffer. At present, our situation is similar to that of the baby elephant. Now, I'll give you an example of the mobile. Today, everyone is carrying a mobile, and we take care that we charge our mobile regularly so that it doesn't count off. It doesn't get count off. Why? Because it is the only gadget which is very handy and helpful. But in that process, we forgot God. And we need to know where he is. So unless we study the God at the Godly University, unless we take pains in the study of the divine, it is not possible. What I want to inform you is the divine legacy is already here. The deities are here, and the divine legacy is unfolding. It is time for us to see or understand where they are, and plus undergo the study at the Godly University and be one with him and use the divine powers for the peace of this world. As a human being, it is duty of every human being on this earth to know about God and to use the divine powers for the benefit of all. Why can't we do that? So this is what I want to say, my message. I share here
I request every human soul, every pious soul, every peaceful soul to understand this and further give peace to others so that this world becomes a place worth living. Thank you. Trisha, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks to TEDx. I hope that the words of Deepak Well, sir, made us all a little closer to the one thing that is beyond all of us. Now, Thank you. with that done, we are drawn to a close to this event. I, on the behalf of my team members, thank you and all our speakers who take their valuable time out for us in these hard times. Before we part, I would like to say, please take care of yourself. With the dire situations around us, it is our responsibility for those around us. Please use masks and maintain social distancing. It is thank you from us at tedxgdmc. Thank you all of you for being a part of this journey. And please fill the feedback forms which will be given to you by TEDx within 1 week through an email. Please fill that feedback forms. Your name will not be